So I got this SPSS file for the analysis. um, इसमें जो आपके पास वेरिएबल हमने लास्ट डेवलप किया है, that is patient bypassing the primary health care facility, yes or no. So that is our main dependent variable बन गया है, which we made through this कि उसकी presenting ailment कौन सी है और duration of illness क्या है, उसकी कितनी है, और वो कहाँ से आ रहा है, that is the district, that is something which we use to develop this variable. um, let's talk about that. हाँ, हमने वो तो कर लिया था. I'm sure you remember the multiple response वाला thing. Yeah. So उसको हम देख लेंगे खैर दोबारा भी. लेकिन let's go ahead और देखते हैं कि different variables का इस different independent variables का इस main dependent variable के साथ क्या कोई association निकल रहा है कि नहीं निकल रहा. For so that purpose what you can do is you have to go to this analyze and descriptive statistics and go to crosstabs. So column में usually हम dependent variable लेते हैं, which is our last variable, so let's check that. ठीक है. And in our row element we select our independent variables. Independent variables, gender for example, male, female, marital status को हम ले लेते हैं, being married, not being married, is it associated, employment of the respondent इसको भी ले लेते हैं. ठीक है. ये फॉर एग्जांपल इन तीनों को हमने लिया है इन आवर रो सेक्शन. अब हम स्टेटिस्टिक्स में किसको चेक करेंगे, काय स्क्वायर को, और किसी चीज़ को सेलेक्ट नहीं करना. क्यों हमने काय स्क्वायर को किया है, क्योंकि ये भी क्वालिटेटिव वेरिएबल है, यस और नो, bypassing yes or no, gender is qualitative, marital status is qualitative, employment category is qualitative. और सेल्स में हम रो परसेंटेज को चेक करते हैं. उसकी क्या वजह मैं बताता हूँ. Let me just do it without it so you get to know the difference. ओके हमने किया. तो अब आप देखेंगे आपके पास over here the first one is about male and female crosstab. So आप देखें आपको परसेंटेज नहीं पता चल रही, सिर्फ नंबर्स पता चल रहे हैं कि 143 मेल से 241 फीमेल सी, बट यू आर नॉट गेटिंग द परसेंटेज की कितनी परसेंटेज है. सो दैट इज़ वाई मतलब 136 का what's the percentage of 136 out of 241. So it doesn't give a good look to the data. So what you can do is हम उसी तरह ही जाएंगे क्रॉस टैब और सेल्स में हम रो को सेलेक्ट करते हैं फॉर द परसेंटेज. Continue, and now let's happens with this gender thing. So over here you see now अब वो जो हमने किया था 143 241, अब उसकी परसेंटेज भी हमें मिल रही है. So out of 143 out of 100%, 67% bypassed the facility, you know, in the male category, and 32.9 did not. Same is the case with this 56 and 43. So अगर आप इधर देखें तो इसको इंटरप्रेट आप कैसे करते हैं. इंटरप्रेट आप ऐसे करते हैं, दिस इज़ योर chi square वैल्यू, दिस इज़ योर chi square वैल्यू, एंड दिस इज़ योर p वैल्यू, टू साइडेड asymptotic significance. आपने सिर्फ इस चीज़ को रीड करना है, which is p value and this chi square value. And so you can tell that there is a difference between male and female when it comes to bypassing the primary healthcare facility, statistically speaking. Let's see the other variables. और इसी तरह बाकी variables भी express होते हैं. अब married interpret होते हैं, sorry. Married unmarried को अगर हम लें, so out of 384 210 were married, 174 were not married, and out of 210 almost 50% bypassed the facility and 50% did not. So again अगर आप देखें majority जो unmarried है वो bypass कर रही है, married जो है वो कर रहे हैं लेकिन इतना नहीं कर रहे जितने unmarried कर रहे हैं. So statistically भी अगर आप देखें तो 22.9 is the chi square value and this is 0.000, which
is actually equal to 0.001, so which is highly significant. This is significant as well, 0.03, but 0.001 is much more significant than this. So this is about the male, female, married, unmarried, and now come towards this formal, informal, and unemployed. Okay, so over here, if you see, uh, formal, informal, unemployed. So unemployed कम bypass कर रहे हैं comparatively. Formal or informal 78% and 73% respectively are bypassing more as compared to this unemployed wala category. So this is the breakdown which is given to you, and again this is significant with the chi-square value of 29.7 and this 0.00, which is equal to 0.0001. So अगर आप इसको वर्ड में कैसे आप करेंगे, वर्ड में आप इसको ऐसे ही करेंगे, इधर जाएंगे and then you can do, what you can do is actually आप इसको कॉपी करें and over here you just paste, ठीक है जी, और इधर आप एक insert कर दें to the right, yes to the right आप ऐड कर दें इसको, आप कह सकते हैं इसको आप merge कर दें, इसको merge कर दें cells को, and what you can write and इसको भी merge कर दें, you can give the heading of chi-square value, क्योंकि आपने सारा टेबल नहीं देना होता जो आपको उसमें बना हुआ है SPSS में, और नीचे आप p वैल्यू की हेडिंग दे देते हैं, just a rough version of it. P value, chi-square value जो भी है 22.9 whatever it is, and the chi-square value is 22.9 and p value was 0.001. So this is it. आप इसको थोड़ा heading को ठीक कर देते हैं and all that, and try to just इसके जो स्पेस है उसको कम से कम रखते हैं ताकि हमारी कम से कम जगह जो है वो जो हमारा राइटअप है उसमें यूज़ हो, क्योंकि हम हर चीज़ के बहुत सारे टेबल्स नहीं बना सकते. So this is an example कि आप इसको कैसे पेश करते हैं, then you have to interpret that as well, that there is a difference between the employment category and in context of bypassing the primary healthcare facility, and more people with the formal informal employment were bypassing the primary care facility, and lesser percentage was actually bypassing the primary healthcare facility. So you have to interpret that as well. This is statistically significant. So this is just one of the the three examples जो हमने अभी की हैं. It's pretty simple. Again telling you descriptive, analyze descriptive statistics, crosstab, और ये सारा आपने डाल दिया इसके अंदर. अच्छा, अब इसमें एक और बड़ी मज़े की चीज़ है, which is let's just remove this. ये तो हमने कर लिया. Let's add this income वाला thing. Yes, monthly income. So अगर हम इसके ऊपर करेंगे, so income आपको पता है बहुत ज़्यादा उसकी कैटेगरीज बन जाएंगी. Let me just tell you an example. देखिए ना, 1000, 2000, 3000 कितना लंबा टेबल बन रहा है. There are so many सब वेरिएबल्स इन द इनकम एलिमेंट. हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते इतना लंबा टेबल शेबल तो हम क्या करते हैं, हम इसकी कैटेगरीज बना देते हैं. और कैटेगरीज कैसे बनाते हैं ये ज़रा और से देखिएगा. ट्रांसफॉर्म रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल. You select that variable which is income, monthly income. You give it a new name, income new, and income new, and all the new values को click करते हैं, and then you create categories. Range आप देते हैं, for example 1000 to 15,000, and give it a value of 1. Add. Then 16,000 to 30,000, 2. Then हम मर्ज कर रहे हैं डाटा को, ठीक है जी, हम मर्ज करने की कोशिश करें. 31,000 to 45,000, 3. 46,000 to 60,000, 4.
और लास्ट वैल्यू चूँकि हमारी हाईएस्ट है तो हम इसको 61,000 एंड अबव कर देंगे, 61,000, ठीक है। सो दिस वुड बी 5 एंड ऐड। तो आप देखेंगे आपके पास एक नया वेरिएबल बन जाएगा, इसको चेंज करना है, अच्छा इसको इधर चेंज करना है, फिर ये नया वेरिएबल बन जाएगा। इसको हमने वैल्यूज़ इधर से दे दी हैं, ओके किया हमने। तो अब आप अपने इसमें देखेंगे आखिर में तो आपका एक नया वेरिएबल बना हुआ है इनकम न्यू का। अगर आप इसके डाटा व्यू में जाएंगे तो आप देखेंगे 2111 लिखा हुआ है, ये सारा 3 लिखा हुआ है, कहीं पे 4 लिखा होगा जिसकी 1 लाख से ज़्यादा हो गया, whatever it is, over here you can see 4. So अभी हमें क्या करना है, इसको तो आप पहले 0 0 कर दें और इसकी हमने अब वैल्यूज़ देनी है। सो 1 was 1000 टू, इधर हमने इसको वैल्यूज़ देनी थी जो हमने उधर दी हैं, 15,000 add, 2 is 16,000 to 30,000 add 31,000 to 31,000 to 45,000 is 3, 4 is 46,000 to 60,000, yes, 5 is 61,000 and above, add, so okay। तो अब आप देखेंगे इधर आपके पास क्या बन रहा है, देखें ये वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं, ठीक है जी। सो नाउ अब हम उसको एनालाइज करते हैं वैसे ही, क्रॉस टैब, उस पुराने वेरिएबल को हटा के हम नए वेरिएबल को डालते हैं जो हमने नया बनाया है, क्योंकि वो कैटेगरीज बन गई हैं। आपने देखा फ्रॉम 1 to 15, 16 to 30 एंड सो ऑन, तो वो अब क्वालिटेटिव वेरिएबल ऑर्डिनल बन गया है। सो वी जस्ट ऐड इट ओवर हियर एंड नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो आप देखें वो जो इतना बड़ा टेबल था, ये इतना लंबा जो भी बन रहा था, विच इज़ नॉट विजिबल इन मोस्ट ऑफ द केसेस, बल्कि है ही नहीं। अगर आप इधर देखेंगे और देखें आपको गलत एक इंटरप्रिटेशन दे देगा 0.06 एंड यू वुड से जी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द इनकम लेवल एंड ऑल दैट, तो ऑब्वियसली आएगा ना। देखें ना बहुत सारे जो लोग हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं इसमें, बहुत सारे 45 जो है वो 15,000 की रेंज में आ गए हैं, सो दैट वुड गिव यू रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे, मर्ज हमने किया इसको फ्रॉम 1 to 15, 16, 30 एंड सो ऑन, तो आप देखें अब आपके पास कुछ ख़ास स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग ख़ास डिफरेंस नहीं आ रहा। द पी वैल्यू इज़ 0.461। सो इनकम कैटेगरी का कोई एसोसिएशन या कोई एलिमेंट नज़र नहीं आ रहा विद बाईपासिंग द प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी। So this is how you can actually convert any quantitative variable into a qualitative variable like we did in the income case. So that was our quantitative variable। अगर आप इसको देखें डाटा में, so हमारे पास जो income category थी that was 21,000, 10,000, 15,000 and so on, and we have converted into a qualitative thing, qualitative। So this is how we do that, record and recode into different variables। तो फ्यूचर के लिए कल को किसी चीज़ के लिए भी आप करना चाहें तो आप क्वांटिटेटिव वेरिएबल के लिए कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है कि हम इसकी ओपनली हम क्यों लेते हैं, क्यों सजेस्ट करते हैं, क्योंकि आप इसका मीन निकाल सकते हैं कि मीन कितना था। यानी अगर मैं इधर एज को डालूँ, सॉरी इनकम को डालूँ इधर, और उसका मैं अगर मीन कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं आराम से मीन, मीडियन, मोड, क्योंकि इट्स अ क्वालिटेटिव वेरिएबल, मिनिमम, मैक्सिमम, स्टैंडर्ड डिविएशन सब कुछ कैलकुलेट कर सकता हूँ। फ्रीक्वेंसी टेबल की ज़रूरत नहीं है। सो आप देखेंगे आपके पास इनकम का मीन आ गया है, यानी 17,600 इज़ द मीन, मीडियन इज़ 14,000, मोड इज़ 10,000, यानी 10,000 सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है। स्टैंडर्ड डिविएशन इज़ ये, मिनिमम इज़ 1,000 रुपीज़ एंड मैक्सिमम इज़ 1,20,000। सो ये आपको इन्फॉर्मेशन अगर आप क्वालिटेटिव डायरेक्टली लेंगे
1 to 15 या 16 to 20 30 करके, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन फिर कभी नहीं मिलेगी. सो वी एडवोकेट कि आप शुरू में इसी तरह ही लें, ओपनली लें, और फिर बाद में आप उसको कभी भी क्वालिटेटिव में चेंज कर सकते हैं, विच हेल्प्स यू टू हैव द एसोसिएशन वाला एलिमेंट और नॉट अदरवाइज. फिर इसके अलावा आप बहुत सारे वेरिएबल्स क्योंकि इसमें हैं, आप उसमें कर सकते हैं. हम हॉस्पिटल्स को ले सकते हैं और देख सकते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर क्योंकि हॉस्पिटल भी हमारा क्वालिटेटिव वेरिएबल है, उसका कोई ताल्लुक है आपके डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ. सो लेट्स गो अहेड एंड सी. ओके, अगर आप इधर देखें तो LRH, KTH, NHMC के सारा डाटा आपके सामने आ गया है. कोई ख़ास क्योंकि सिग्निफिकेंट वैल्यू अगर आप देखें तो दिस इज 0.07, which is not a significant value. It must be less than at least 0.05. So in this case, if you see कोई ख़ास difference नहीं है between the teaching and these hospitals and bypassing the primary healthcare facility and all that. So ये आपको इधर से पता चल रहा है. फिर और हमारे पास now you can play with the data. अब आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह भी प्ले करना चाहें, it's up to you how. आप सेहत इंसाफ कार्ड को ले सकते हैं. इसको तो हमने यूज़ किया था टू डिटरमिन कि भाई उसको है कि नहीं है, बाईपास कर रहा है कि नहीं कर रहा. हाँ, ये बड़े मज़े का है कि do they know about BHU? Do you know about BHU? So इसको हम ज़रा एनालाइज करते हैं कि इनको क्या पता था कि नहीं पता था. So let's see. Do you know about BHU? So इसमें तो सॉरी, इसमें तो हमने एनालाइज में जाके फ्रीक्वेंसीज पे जाना है. So let's see, हम जाते हैं and do you know about BHU? So let's see. सॉरी, इसमें हमने टेबल बनाना था. क्योंकि तो वो है क्वालिटेटिव वेरिएबल है, इसमें तो हमें सिर्फ मोड ही पता चलेगा, हमें मीन मीडियन तो पता नहीं चल सकता, ना मिनिमम मैक्सिमम पता चल सकता है. सो लेट्स गो अहेड एंड सी. ओके ओके, सो ओवर हियर इफ यू सी mode is 1, which is yes. So almost 80% knew about BHU, 80% or 78.9% knew about BHU. 21.1% didn't know about the BHU. So that is something जो हमें एक और डाटा पता चलता है कि 20% लोगों को तो पता ही नहीं कि उनके एरिया में BHU है. So that again is a good data to, you know, a selling point that 20% of the sample didn't even know about that there's a BHU in their area. So that is something हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं वैसे ही जैसे हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं. इसके अलावा हमारे पास क्या है जी डाटा में, इन सारी हाँ मैं इसकी बात कर रहा था. एजुकेशन को आप कर सकते हैं बिल्कुल. यू हैव द सेहत इंसाफ कार्ड. एम्प्लॉयमेंट तो हमने कर लिया है, चलो इसको करते हैं. Crosstab, education and यह सेहत इंसाफ कार्ड. सो इसको अगर हम देखें, पहले एजुकेशन को देखें तो ये भी you know statistically significant नहीं आ रहा, which is fine. I mean इसमें परेशानी की ज़रूरत नहीं है. I mean that is how it is. So कोई ख़ास डिफरेंस नहीं आ रहा statistically speaking. So education का कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि the majority of them are actually, you know, kind of, you can say majority of them are illiterate. 213 out of 384, 213 are illiterate. So it's almost, I mean, I don't know, more than 60%, I guess. Yes. So majority of them were illiterate, so you can just write it down. Okay, illiterate हमारे पास कहते हैं, you know, वो तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं इसकी आराम से.
हम इस तरह भी कुछ डाटा को हम डिस्क्रिप्टिवली बताते हैं, पहले हमेशा एकदम हम उस पर नहीं आते हैं, जो पहले हम डिस्क्राइब करेंगे। आप थोड़े से अपने प्रीवियस आर्टिकल्स को रीड कीजिएगा और देखेंगे कि उसमें कैसे हम इन्होंने कैसे डिस्क्रिप्टिवली देखे ना ये सारा बताया हुआ है। सो इफ़ यू सी 55.5 जो मैं 60 कह रहा था और इलिटरेट, सो ये आपको बता सकता है कि जी मेजॉरिटी जो हमारी आती है वो इलिटरेट होती है। बहुत ही कम जो आते हैं हमारे सरकारी अस्पतालों में, ऑलमोस्ट 3.1% और 9.9, और हाई को अगर हम मिला लें सो इट्स अराउंड 20% आर काइंड ऑफ प्रॉपरली लिटरेट। या अगर हम मिडिल को भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। प्राइमरी आई डोंट थिंक सो, हाउ डू यू डिफाइन दैट, आई डोंट नो whether you want to add it or not, but ये तो middle high intermediate यूनिवर्सिटी इनको हम literate ही समझते हैं। So it's around I guess 24%, 25% majority are illiterate। so हम ये descriptive statistics भी इस तरह बता सकते हैं। इसके भी बता सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों के बता सकते हैं कि मेल कितने थे, फीमेल कितने थे, यानी हम उसका ग्राफ भी बना सकते हैं, बार चार्ट बना सकते हैं बहुत आसानी से। परसेंटेज में बताना चाहते हैं तो परसेंटेज में बता देते हैं। हम कंटिन्यू है क्या। सो आप देखेंगे आपके पास ये बार चार्ट भी बन जाएगा। देन यू कैन एडिट दिस। आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, एलिमेंट्स पे जाते इसके ऊपर जाते हैं एंड आप इसको कहते हैं वो है आई गेस शो डाटा लेबल्स, क्योंकि अक्सर ये ग्राफ बताना इज़ नॉट इनफ। आप ग्राफ में जाके ना, हाँ ये शो डाटा लेबल्स आ जाए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर डाटा लेबल्स आ गए। वो इलिटरेट वही जो परसेंटेज थी अब इसको ग्राफिकली बता रहा है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जब भी आपके पास SPSS में फ़ाइल खुलती है, आप इसको डबल क्लिक करते हैं। पहले तो ये परसेंटेज नहीं थी ना, लेट मी जस्ट डू दैट। ओके, ये होनी बार ये आपके पास इस तरह नहीं आएगा। आप इसको क्लिक करेंगे दोबारा से और इधर आप एलिमेंट्स में जाके शो डाटा लेबल्स आप करेंगे, ठीक है। तो आपके पास ये फिर आ जाएगा जब ये शो डाटा लेबल्स। तो आप इसका फॉन्ट ज़्यादा कर सकते हैं। इट्स बेटर टू, हाँ इसको आप देखेंगे बड़ा हो गया ज़रा। सो इसी को आप कॉपी पेस्ट उधर कर लेते हैं, कॉपी चार्ट एंड पेस्ट इन वर्ड, क्योंकि इवेंचुअली तो हमने वर्ड में डालना है ना सब। सो दैट इज़ हाउ यू कैन डू दैट। ये तो खैर थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसका फॉन्ट साइज़ को थोड़ा कम ही रखें, 10 तक रखने, 9 तक रखने। और इसको हम ग्राफिकल पाई चार्ट ही बना सकते हैं। सो डिपेंड्स आप कैसे इसको कर रहे हैं, ठीक है जी। ये तो ये चीज़ हो गई। इसी तरह और बहुत सारी है आपके पास। तो बहुत सारे हैं जिसमें उसको कितना डिस्टेंस कितना है, हाउ डू यू गेट टू द BHU एंड इनफैक्ट टू द हाउ डू यू गेट टू द BHU, ये आ गया। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच द बाईपास फैसिलिटी, इसको हम कर लेते हैं। ये दोनों क्वालिटेटिव हैं, इसके लिए हम पाई चार्ट भी कर सकते हैं। जस्ट गिविंग अनदर एग्जांपल। ओके करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास ये बन जाएगा, ठीक है। हाउ डू यू गो, हाउ डू यू गेट टू BHU, बाय वॉक, बाय ऑन ट्रांसपोर्ट, बहुत कम है। तो अब आप इसको अभी तो नंबर्स नहीं है इसके ऊपर, तो आप इसको दोबारा डबल क्लिक करेंगे, ये चीज़ ओपन होगी। आप एलिमेंट्स में जाएंगे और शो लेबल्स करेंगे तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगी। फिर टेक्स्ट लेआउट में जाके आप प्रेफर्ड साइज 10 कर दें, विच वुड बी बेटर 3 पॉइंट। तो इसी को आप कॉपी पेस्ट पे कर सकते हैं। ओके, इसकी आप हेडिंग भी चेंज कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, एग्जांपल दे रहा हूँ, यू कैन एडिट दैट, ठीक है। सो ये क्लोज कर दें, ओके कर दें एंड देन यू कॉपी दैट।
and paste it over there in the word. This may be how do you reach the primary, reach the bypass primary facility. How long does it take to reach the bypass primary facility? Less than 15 minutes, 15 minutes to 1 hour. Okay. Okay, there were very less people who actually uh, let me just get to this first. So majority were very close to their bypass primary facility. It means the KTH, LRH or HMC, right? How long does it take to reach the bypass? Is it the BHU? I guess it's a BHU. You're talking about BHU probably. Okay. So, ये वाला. How do you? ये वाला था ये तो. This is actually about the BHU, and the BHU is actually close. ये actually आपका tertiary care वाला था. How do you get to the tertiary? How long does it take to reach the tertiary care? तो इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा. How long does it take? Okay, तो इधर अगर हम देखें, majority said 15 minutes to 1 hour. Okay, so that is in front of you. आप इसको किसी तरह भी interpret कर सकते हैं. No. So this is in front. 59.1% traveled, had to travel 15 minutes to 1 hour, and 28.65% had to travel for 1 to 3 hours, which is a big number. So that is how you can actually, play with the data. तो कुछ चीज़ें आपने डिस्क्रिप्टिवली बतानी होती हैं, जिस तरह मैंने अभी बोला है, ग्राफ्स की फॉर्म में, बार चार्ट हो या पाई चार्ट हो, या टेबल्स की फॉर्म में डिस्क्रिप्टिवली बतानी होती है. मैंने क्लास में बोला था. और कुछ को आपने स्टेटिस्टिकली यानी इन्फ्रेंस जब हम करते हैं, इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं, तो तब हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं टेस्ट को. तो पहले डिस्क्रिप्टिव है और फिर इन्फ्रेंशियल है. ओके. सो ये आपके पास है आपकी डाटा फाइल. अब आपको समझ तो आ गई है. नाउ यू कैन प्ले विद दैट. कुछ चीज़ मिस तो नहीं हो रही, क्योंकि कुछ चीज़ें तो आप खुद करेंगे. आई एम टेलिंग यू द बेसिक एलिमेंट्स. इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू प्ले विद दैट मोर. किन किन चीज़ों को आप एसोसिएट करना चाहते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ मेन वेरिएबल. ठीक है जी. दिस वन. और हाँ, वो तो मैं पहले बता चुका हूँ कि इसको अगर हम मल्टीपल रिस्पॉन्स करना चाहें तो कैसे करेंगे. वो हम डिफाइन वेरिएबल सेट करेंगे और सारे ऐड करेंगे. ओके. डॉक्टर ये सारे बिल्कुल ठीक है. काउंटेड वैल्यू इज़ 1. रीजंस मैं ऐसी टाइम सेविंग के लिए कर रहा हूँ, या फिर मैं इसमें जाके मल्टीपल रिस्पॉन्स में फ्रीक्वेंसीज को क्लिक करता हूँ, इसको इधर लाता हूँ और ओके करता हूँ. सो ये सी कि हमारे पास जो है, ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ. टू सीक बेटर केयर जो था, सबसे ज़्यादा उसकी परसेंटेज थी, जो सबसे ज़्यादा जो है लोग उसको प्रेफर कर रहे हैं फॉर टू बाईपास दी प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी. तो ये भी अगेन हमारे पास एविडेंस है कि जी उधर शायद इतने अच्छे डॉक्टर्स नहीं हैं, या डॉक्टर्स हैं ही नहीं शायद, प्रॉब्ली. सो डॉक्टर नहीं है वो तो 10.7% है. लेकिन वो शायद उनकी ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग नहीं हुई है. दे डोंट नो. इसलिए आपने देखा अभी केपी गवर्नमेंट ने फैमिली मेडिसिन में डिप्लोमा स्टार्ट किया, ताकि जो नीचे के डॉक्टर्स हैं उनको ज़्यादा अच्छा ट्रेन किया जाए. सो दे आर बेटर इक्विप्ड विद देयर स्किल्स, सो दे कैन मैनेज द पेशेंट्स रियली वेल ओवर देयर.
सो उनको इक्विप करने की ज़रूरत है ताकि वो नीचे के पेशेंट्स नीचे ही रहें, आम चीज़ों के लिए ऊपर ना आए। सो इसको हम ज़रा करते हैं, क्रॉस टैप करते हैं विद आवर, लेट्स सी, लेट्स प्ले दैट कैसे होता है ये। रीजंस को हम इधर ले आते हैं और बाईपास को कॉलम में ले आते हैं, ऑप्शंस रो में कर लेते हैं, कंटिन्यू। लेयर की ज़रूरत तो हमें नहीं है। जेंडर भी कर लेते हैं, ओके। Define ranges, okay। इसको फिलहाल के लिए छोड़ दें, इस क्रॉस टैब को, लेट्स फॉरगेट अबाउट इट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है इसके लिए। हम जस्ट आई वाज जस्ट प्लेइंग, इज इट पॉसिबल, अगर हुआ तो मैं आपको बाद में बता भी दूंगा। ठीक है जी, सो दिस इज़ हाउ यू कैन प्ले विद द डाटा। आप देखिएगा इसको, कोई भी इशू यू कैन ऑलवेज आस्क देम। थैंक यू।